be available by tomorrow for sure. So I think Uzma has purchased a domain. Uzma, have you purchased any domain? हाँ वो लास्ट टाइम परचेज किया था मैंने Okay, uzma.com. so it's available for 1 year, right? Yes. Okay, sure. So you can what you can do is you can have your on-premises environment created, and then you can synchronize your on-premises AD to your tenant. I mean, you have already purchased your tenants as well, right? I mean, free tenants, which is available Yes, yes, 4 months, 1 month trial, and yes. we have another 3 months trial. So total 4 months it will be available for you. So you can make use of it. And yeah, one more thing. I mean, this lab, if you're looking to build up the on-prem AD on my lab server, that's fine. But it would be like available for you for 1 month only, right? During the training process, and after, even after the training, I'll make it available for you. But again, once a new batch starts in, I will have it occupied by the new people coming in, right? So Okay. my suggestion would be, if you have your own purchase domain, which you can actually utilize for 1 year, right? अगर आप मेरे Yes. सर्वर पे वो डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे हम, लेट्स से you purchase a domain like uzma.tech, ठीक है? हाँ. तो ये Yeah. डोमेन अगर अगर आप मेरे सर्वर पे बनाएंगे विथ योर परचेज डोमेन, इट विल बी जस्ट फॉर वन और 2 मंथ्स फॉर यू, लेकिन आपका डोमेन तो 1 साल का वैलिडिटी है उसकी. सो इट विल बी बेटर अगर आपके लैपटॉप में कुछ स्पेस है, आपके पर्सनल लैपटॉप में कुछ स्पेस है, सो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट एट योर ठीक है. प्लेस एज वेल. ठीक है. अगर विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज कर रहे हैं आप, सो यू कैन हैव हाइपर वी इनसाइड इट. ठीक है, हाइपर वी इज कमिंग इन बिल्ट नाउ विद विंडोज 10 एंड विंडोज 11. So you can Okay. use Hyper-V directly, and then you can We can make create virtual environment. Okay. exactly. हाँ, आपके लैपटॉप में भी अगर स्पेस है तो आप वर्चुअल मशीन बना के वहाँ पे भी होस्ट कर सकते हैं ऑन प्रोमाइसेस एनवायरनमेंट. Okay. 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 Thank you. You're welcome. So I think recording has started. Okay. So in the last session, we have got some introduction on how to integrate our applications into Azure Active Directory. And when we talk about application, our application, it can be, I mean, it depends on where exactly it is hosted, right? So there can be different scenarios from where the application is coming. Let's say you're using a publicly available application, any application which is widely used, like Salesforce, Zoom application, okay, Falcon application we discussed yesterday. So these are like most widely used by different companies across the globe. So it's available as a gallery application. Okay. So it's a third-party application available, and you want to utilize it. Cisco AnyConnect, Cisco WebEx applications, if you want to make use of. So these are widely used applications. So what Microsoft did, Microsoft made it available, pre-integrated, and made it available in Gallery, in Azure Gallery. So you can just add them into your tenant and you can utilize it. Apart from that, we have, like, let's say any similar third-party application which is widely used, but as of now it's not available in the gallery. So it can be considered as a non-gallery application. So you can also integrate a non-gallery application. Apart from that, you can have your, let's say you have your own application which is already running for quite few years in your on premises. You have built your own application for your internal purpose for your employees, and it is hosted somewhere at your on premises, and it is up and running, but the users are able to access only internally over the network. They cannot access it globally, and you want to integrate it into Azure so that you can make use of the Azure services as well with that application. So you can integrate it as a on-premises application with the help of App Proxy Connector. So with App Proxy Connector, you can have an external URL created for your internal application. So it will just translate your external URL to internal URL and give the access to internal application. That is the third method. Fourth method we have seen is like developing your own application. So if you're a developer by yourself and you want to you want to sorry, you want to develop your own app, so you can go with that option as well. That is the fourth option, create your own application.
wherein you have to have the complete code of the application. So if you're a developer, you have to integrate everything over here, the code and the manifest, everything should be there, uh, regarding the application and the redirect URIs and everything. So if you're a developer, you're developing everything from scratch as an application, you have to bring everything over here and you have to provide all that information over here. Okay, so these are the four widely available options to integrate. Resume, are you sharing the screen? Not yet, I think. Shit. Yeah, we are unable to see those options. Yeah, it's the same one which we explored yesterday. The Yes. gallery, non-gallery, on-premises application, and the application that you are developing by yourself. Create your own application option. Okay, it's visible now, right? Yes. Okay. So this was the introduction part of integrating an application. Now we will take a look into what all parameters needs to be configured when an application is integrated. Okay, and how to achieve single sign-on with this application. Okay, so there's a parameter called single sign-on. Any idea on this? Have you ever heard about it? Single sign-on, SSO. Yes, Okay, what does it do? Any basic idea as well? I've heard it about it, but I don't know what does it do. Okay, okay. Single sign-on, as the name itself says, it's like it's limiting your sign-on. I mean, number of sign-ins. Okay, so you just have to sign in once. That is single sign-in. You just have to sign in once, and then you will get access to all your applications with a single sign-in. You don't have to sign in every time to each and every application. For example, you start your day at your office. Okay, so you will have to log into multiple applications, right? आप जैसे ही ऑफिस एंटर करते ऑफिस को जाते some I mean for on a given day if you go to office you turn on your laptop. ठीक है, फिर लैपटॉप ऑन करने के बाद आप कुछ certain applications, you need certain applications to complete your day to day job, right? So you will log into each and every one of them. For example, Outlook mailbox login करेंगे, Teams application login करेंगे, and then you will log in your ticketing tool. You will have a ticketing tool wherein you will be getting your cases, your tickets to work on. So you will log in over there, and then you will have some troubleshooting tools in order to troubleshoot that ticket or anything as such. So you will log in over there, and then you will log into your um, time tracker, okay, or your labor, or let's say if you have ever worked on any call center kind of job or technical support job, so you will have to have to log into a tool wherein you have to mention that you're going on break, right? You have to whenever you're taking a break, like 15 minutes of break, you have to mention over there, I'm taking a break here. So it will actually track your activity. All right, so these kind of multiple applications you will log in every day, right, when you go to office. So it will be very much embarrassing, I mean it will be very much like difficult basically. So when you have to log in everywhere, right? आप आउटलुक ओपन करें, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है, फिर अगेन टीम्स ओपन करें, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड you have to enter. Then again you open a new browser and you have to log in somewhere, again same username password. Every time you have to provide the same username password everywhere wherever you log in, right? So it's very disturbing, right? Agree with me? Yes. Yeah. Yes. So in order to avoid this situation, in order to simplify the user experience, we have something called single sign-on. Okay. So you sign in once and that's it. You will be able to log in everywhere directly. ठीक है. You might have experienced this as well, right? जैसे आपका Outlook है, ठीक है, आप Outlook daily open नहीं करते. I mean, when you open the Outlook, it doesn't prompt you for credentials every time, right? It will directly load everything and it will give you the access to the application to your mailbox. Have you ever experienced it? Yes. Yes. That's Right. by default रहता समझा था मैं Outlook.
बाय डिफॉल्ट रहता समझे आप, बट इट्स समथिंग लाइक सिंगल साइन ऑन हैपनिंग इन द बैकएंड, राइट? ओके आप मशीन में लॉग इन करते हैं, यू विल लॉग इन टू योर लैपटॉप, यू विल प्रोवाइड योर पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, कंपनी रिलेटेड कंपनी पासवर्ड, ठीक है? वो लॉग इन करने के बाद आपके सारे जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाते, you don't have to provide username password. This is happening with the help of single sign on behavior. Okay, there is a solution in place. Your company is using single sign on somewhere, they have deployed this feature for you. That is why it's you're used to it. आपको अब कॉमन दिख रहा हो, आपको आपको नॉर्मल दिख रहा है, राइट? सिंगल साइन ऑन इज समथिंग you think like it's normal, but it's actually not normal. अगर सिंगल साइन ऑन नहीं होता, then you will have to log in every time. That will be very much difficult for you, right? So company have a solution in place already. Your company already have a single sign-on solution in place, so you're getting single sign-on and you're used to it now. Okay. So yeah, a single sign-on. This is what single sign-on is. You will log into one application, or let's say you will log into your laptop once, and inside once you're logged in over there, you open any application, you're logged in already. You will not, it will not prompt you for username password. It will directly take you in inside the application. It will not prompt for username password every time if single sign-on is in place. Okay, so this is what single sign-on does. Now we will take a look and see how single sign-on is configured. So we have integrated our application, right? Applications are integrated. After application is integrated, I want my users to achieve single sign-on on all these applications. For example, अभी मेरे tenant में इतने सारे applications हैं, ठीक है? These many applications I have in place. Let's imagine if a user have to log in on each of these applications on a given day. ठीक है, एक दिन में उसको काम कंप्लीट करने के लिए ये सारे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? एवरी एप्लीकेशन ही विल हैव टू लॉग इन एंड ही हैव टू कंप्लीट हिज एक्टिविटीज. So it will be very difficult for him to log into each and every application with the same username and password. It will be very much annoying, right? तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारे एप्लीकेशंस पे सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर कर दूंगा. व्हेनेवर आई एम इंटीग्रेटिंग एनी एप्लीकेशन, आई विल गो टू दिस एप्लीकेशन, आई विल कॉन्फ़िगर सिंगल साइन ऑन. So what will happen? With the same credentials, he will be able to log in everywhere. He will not be prompted for credentials again and again when he is accessing any of these applications. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और any confusion? पासवर्ड It is. एक्सपायर कब होता फिर सुनील भाई? Sorry, पासवर्ड एक्सपायर password. Yes, that will be very interesting discussion. I will have that discussion in the coming up. ये सिंगल साइन ऑन देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि तो सिंगल साइन ऑन में पर्टिकुलर एप्लीकेशंस जो जो देना है एक्सेस उसको ही देना रहता है या पूरे रहते हैं उसमें? जो एप्लीकेशन पे आप सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करें, वो एप्लीकेशन पे यूजर को SSO बिहेवियर मिलता. ओके ठीक है, we will take a look into how SSO is configured, and then yes, when does the password I mean, when does the session expires, and when will when he will have to log in the next time. That will be a very interesting discussion. We will discuss about it as well today. Uzibai, I have one doubt. Yes. For let's say, so like in some of the cases, different applications, people will set different ID and passwords. So how In it will that be? case, yes, in that case there will not be SSO. ठीक है, Okay. देखिए for this situation, let's say यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है? ये टेनेंट में मेरे पास एक यूजर है, that is इब्राहिम. 1 second. ठीक है, ये इब्राहिम @resi.store, ये यूजर है. ये यूजर को मैं क्या किया, ये सारे एप्लीकेशंस पे एक्सेस दे दिया, जो एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया. फॉर एग्जांपल, गोइंग टू एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, दिस एप्लीकेशन सेल्सफोर्स. ठीक है, यहाँ पे सेल्सफोर्स पे मैं क्या किया, यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाके इब्राहिम को एक्सेस दे दिया. इब्राहिम इज नाउ, 1 second, ऐड यूजर, सॉरी, ऐड यूजर बोल के मैं क्या किया, यहाँ पे इब्राहिम यूजर को एक्सेस दे दिया. सो नाउ इब्राहिम will have access to this application. Role है, he is just a standard user. ठीक है, now this application, ये application का access इब्राहिम को है.
will take some time to refresh. Mhm. Yep. It's assigned, but it's not listing for some reason. There is a mandate checklist. Select a role. I mean, We have already selected it. okay. We have already selected as a standard user. Okay. That's not allowing me to select because Ibrahim is already selected. Okay. Ibrahim has a standard user. Okay, assign. Now Yeah. it's listed. Okay, so now Ibrahim is a standard user. He should be able to access this Salesforce application. Okay, assign kar diye. Similarly, Ibrahim has access to multiple other applications in this tenant. ठीक है, ये application में other applications पे भी इब्राहिम को access assigned है. ठीक है, multiple applications है ना यहाँ पे. सारे Yes. applications पे let's say Ibrahim is a user. He should be able to access them. ठीक है, तो same user account से आप सारे applications login करें, right? Because Ibrahim user account is same, ibrahim@resi.store. ठीक है, Yes. same user account से आप हर application पे आपको access granted है. You're added as a standard user. So here you should receive SSO behavior because you're using the same account. नहीं, अगर कोई Okay. दूसरा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन Azure में इंटीग्रेटेड नहीं है, and this user account ibrahim@resi.store is not the actual account who should access that. वहाँ पे कोई दूसरी यूपीएन है, इब्राहिम या फिर कुछ कोड है आपका लॉगिन करने के लिए. इट्स the login method is completely different, the user account is completely different, then definitely there will not be SSO because that application is not integrated with Azure. अगर Azure से integrated रहता तो यूजर अकाउंट सेम रहता, एप्लीकेशन सेम रहता, राइट? आइडेंटिटी प्रोवाइडर सेम रहता. Azure will be the identity provider. तो नहीं, अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन है जो Azure से इंटीग्रेटेड ही नहीं है, then you will not get SSO, Azure based SSO on that application. ठीक है. Yes. Okay. Now let's go back to this application and see how SSO is configured. Okay, I have something called single sign-on blade over here inside this application. Okay, so now I have the configuration blade over here. The single sign-on method is SAML based sign-on. SAML. SAML is a protocol. Okay, it stands for something markup language. One second, I'll exactly. Yeah, security assertion markup language. SAML stands for security assertion markup language. It's a protocol. Like for example, we have learned about some protocols, right? TCP/IP protocol. You might have heard about, right? TCP/IP protocol hai, Yes. Kerberos protocol hai. So these are protocols. Protocols is nothing but a standard. It's a way of authenticating and logging in. Okay, it's a procedure. Protocol is nothing but a procedure. तो वैसे ही यहाँ पे एक ग्लोबली यूज्ड प्रोटोकॉल है, दैट इज SAML. SAML is a globally used protocol. SAML, SAML, security assertion markup language, SAML stands for. ठीक है, I'll share the document as well about what is SAML and what does it do in detail. ठीक है, तो SAML is a sign in method which we will be using to achieve single sign on. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल साइन ऑन के लिए कुछ पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं. ठीक है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम डिटेल्स, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एप्लीकेशन सो दैट यू विल अचीव SSO, सिंगल साइन ऑन.
यहाँ पे होता क्या, आप क्या कर रहे हैं, बीइंग द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, Azure being the identity provider, you are setting up a trust between the application provider and identity provider. ठीक है, Salesforce is the application provider. Salesforce क्या है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन साइट से आप क्या कर रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं कि ये डोमेन के रजी डॉट स्टोर के यूजर जब भी आपको लॉग इन करेंगे, सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे, तो वो यूजर को ये टेनेंट पे रीडायरेक्ट करना ऑथेंटिकेशन के लिए, बिकॉज दिस टेनेंट इज द एक्टिव डायरेक्टरी who is responsible to do the authentication and authorization. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं एप्लीकेशन साइड से। this configuring this page is nothing but creating a trust between your identity provider and your application provider। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब एप्लीकेशन का यूआरएल जहाँ पे एप्लीकेशन होस्टेड है, फॉर एग्जांपल salesforce.com, जो भी है एप्लीकेशन जहाँ भी होस्टेड है, साइन ऑन यूआरएल, रिप्लाई यूआरएल, ये कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जो एप्लीकेशन साइट से कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड फॉर ईच एप्लीकेशन वी हैव अ ट्यूटोरियल, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस यस्टरडे, राइट। हर एप्लीकेशन का एसएसओ कॉन्फ़िगर करने के लिए एक ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंट है। सो फॉर सेल्सफोर्स आल्सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप है हाउ टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ एज वेल। ठीक है, select the single sign-on page, go to the SAML configuration, and then configure the identifier text box। वहाँ पे आपको ये identifier enter करना है। ठीक है, identifier is https सब डोमेन, मतलब आपके डोमेन का नाम .my.salesforce.com। ठीक है, ये URL है सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन, जैसा facebook.com रहता ना, अभी फेसबुक को आप एसएसओ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, फेसबुक लॉग इन करना यूजर, तो ही शुड गेट एसएसओ एवरी टाइम। तो सिमिलर टू दैट एक salesforce.com बोल के एक एप्लीकेशन है। तो salesforce.com को एसएसओ अचीव होना मतलब यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम यूआरएल्स, सेल्सफोर्स के कुछ यूआरएल्स रहेंगे, वो कॉन्फ़िगर करेंगे आप आपके एप्लीकेशन में। कंफ्यूजन है और अंडरस्टैंडेबल? I've taken Yes, ma'am. so many names, trust, we will establish a trust and all, तो वो सब any confusion on that? नहीं कंफ्यूजन नहीं, वो एक बार स्टेप्स और एक बार बताइए आप कैसे ऐड करना है। हाँ, ये डिटेल में अपन देखेंगे, स्टेप्स पूरा डिटेल में अपन देखेंगे, बट या आई जस्ट वांट टू एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग एंड देयर इज नो कंफ्यूजन। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एप्लीकेशन से एक ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी आप है फॉर एग्जांपल इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम इज गोइंग टू विजिट समवेयर। ठीक है, इब्राहिम बिलोंग्स टू विप्रो कंपनी। ठीक है, विप्रो कंपनी को बिलोंग करते हैं इब्राहिम, इब्राहिम इज अ विप्रो एम्प्लॉय। ठीक है, नाउ इब्राहिम इज गोइंग टू विजिट हिज क्लाइंट। ठीक है, विप्रो का एक क्लाइंट है, विप्रो के पास एक प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा, टोयोटा कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, टोयोटा कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे कौन, विप्रो, विप्रो इज डूइंग सम बिजनेस विद टोयोटा। ठीक है, टोयोटा का जो भी आईटी सपोर्ट है विप्रो इज हैंडलिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इब्राहिम इज वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, वो प्रोजेक्ट में इब्राहिम काम कर रहे हैं, इब्राहिम इज एन एम्प्लॉय ऑफ विप्रो। ठीक है, अभी इब्राहिम इज गोइंग टू विजिट टोयोटा कंपनी। ठीक है, फॉर सम क्लाइंट रिलेटेड मीटिंग, कुछ है, कुछ बिजनेस डिस्कशन है, सो इब्राहिम इज गोइंग टू विजिट ओवर देयर। ठीक है, टोयोटा की कंपनी को विजिट करने वाले हैं इब्राहिम। क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टूड? जी। Yes. Ibrahim Yes. is a Wipro employee. He is going to visit his client, that is Toyota. Client की कंपनी को visit करने वाले हैं. Now, when Ibrahim is going to visit Toyota, he will be carrying his ID card. Wipro का ID card लेके जाएंगे, right? Wipro का ID card लेके गए तो Toyota वाले allow नहीं करते, right? वहाँ पे एक security guard रहेगा. He will not allow him. आप विप्रो का आईडी कार्ड बता के ये कंपनी में एंटर नहीं हो सकते। यू हैव टू शोकेस दैट यू बिलोंग टू दिस कंपनी। आप टोयोटा को बिलोंग करते बोल के आप बताना चाहिए आपकी आइडेंटिटी, टोयोटा की आइडेंटिटी बताएंगे तो आपको अंदर आने देंगे। ठीक है, सही है। सिमिलर टू Yes. दैट यहाँ पे जो अपन ये जो ट्रस्ट बना रहे ना, ये क्या कर रहे हैं अपन, इब्राहिम बिलोंग्स टू रजी डॉट स्टोर।
रजी डॉट स्टोर बोल के टेनेंट है, इब्राहिम इज अ यूजर इन रजी डॉट स्टोर, ठीक है। इब्राहिम इज गोइंग टू एक्सेस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, व्हाई विल सेल्सफोर्स अलाउ हिम? सेल्सफोर्स because he is a part of Resi store. रजी डॉट स्टोर, तो यहाँ पे पहले क्या है, एक ट्रस्ट बनना जरूरी है। सेल्सफोर्स और रजी डॉट स्टोर के टेनेंट के बीच में एक ट्रस्ट बनना है, ठीक है। वो ट्रस्ट बनेगा, विप्रो और टोयोटा के बीच में एक ट्रस्ट होना है कि विप्रो शुड कॉन्टैक्ट टोयोटा एंड इन्फॉर्म दैट माई एम्प्लॉयज विल बी कमिंग टू यू, प्लीज ऑथेंटिकेट देम एंड ऑथोराइज देम, ठीक है। Cool. ओके जी ओके, हाँ अंडरस्टूड। विप्रो के एम्प्लॉयज टोयोटा को जाएंगे, एक्सेस देना है, ऑथोराइज ऑथोराइज दे शुड बी ऑथोराइज टू गेट इनसाइड, ठीक है। दे शुड बी ऑथेंटिकेटेड, आइडेंटिटी विप्रो की ही बताएंगे, बट दे शुड बी अलाउड इनसाइड, ठीक है। क्रेडेंशियल्स विप्रो के ही देंगे, यूजर नेम पासवर्ड विप्रो के ही रहेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में अंदर आने देना है, रिजेक्ट नहीं करना है। वो रिजेक्ट नहीं होना बोल के पहले से यहाँ पे ट्रस्ट बना, एप्लीकेशन के साथ एक ट्रस्ट बना के रख दे रहे, ठीक है। यस। अभी समझ में आया? जी क्लियर है? हाँ। जी एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं अपन, एप्लीकेशन के साइड से जो यूआरएल्स है वो यहाँ पे लाके कॉन्फ़िगर करेंगे, so that whenever the user is accessing the application he should be landed to this URL, ठीक है। वो ये पेज पे जाके लैंड करेगा, लैंड करने के बाद facebook.com फॉर एग्जांपल facebook.com पे जाके वो लैंड हुआ, ठीक है। हिज ब्राउजर he went to that page facebook.com। अभी facebook.com पे जाके वो क्या करेगा, यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा। इट्स सिमिलर टू टोयोटा के एंट्री, आई मीन टोयोटा के एंट्रेंस पे जाके आप विप्रो की आईडी कार्ड बता रहे, राइट। facebook.com पेज पे जाके आप क्या कर रहे हैं, रजी डॉट स्टोर के यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। समझ में आ रहा भाई? जी जी फेसबुक रजी डॉट स्टोर को नहीं पहचानता, सिमिलरली टोयोटा विप्रो को नहीं पहचानता, विप्रो के यूजर को नहीं पहचानेगा, विप्रो की आईडी कार्ड बताएंगे तो आपको अंदर नहीं आने देगा, आई डोंट आइडेंटिफाई दिस यूजर बोल के बोलेगा, ठीक है। सिमिलर टू दैट अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूआरएल्स पहले तो दे दिए, ठीक है। एप्लीकेशन के रिलेटेड यूआरएल्स दे दिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, वी विल कम बैक टू दिस, व्हाट इज एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट्स है, कुछ मेटाडेटा यूआरएल है, वी विल लुक इनटू दिस एग्जैक्टली क्या है। फिर अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन साइड में ये यूआरएल्स शेयर करते हैं, एप्लीकेशन साइड में लॉगिन यूआरएल, login.microsoftonline.com with some id, ये क्या है, E421ED, एग्जैक्टली ये क्या है देखेंगे, ये मेरी टेनेंट आईडी है, E24ED, ठीक है। दिस इज माय टेनेंट आईडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सेल्सफोर्स को कि जब भी मेरा यूजर रजी डॉट स्टोर वाला यूजर आपके पेज पे लॉग इन करेगा तो वो लोग को ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट करो, कहाँ पे, login.microsoftOnline.com with my tenant ID, ठीक है। क्योंकि मैं ये लोग का आइडेंटिटी प्रोवाइडर हूँ, आई एम द एक्टिव डायरेक्टरी, आई विल बी एबल टू वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये जी बताया था ना मैं, login.microsoftonline.com जाता, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का एक वेबसाइट है peoplehub.mindtree.com, व्हेन आई एम एंटरिंग दैट यूजर नेम इट इज टेकिंग मी टू login.microsoftonline.com, राइट। यस यस। क्यों क्यों लेके जा रहा भाई, क्योंकि वो टेनेंट में मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, दैट टेनेंट कैन ऑथेंटिकेट मी, दैट टेनेंट कैन वैलिडेट माय क्रेडेंशियल्स एंड ऑथेंटिकेट मी, राइट। यस Salesforce cannot authenticate you, Facebook cannot authenticate you, क्योंकि Facebook में आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, आप जो अकाउंट से लॉग इन कर रहे हैं दैट इज रजी डॉट स्टोर, रजी डॉट स्टोर का अकाउंट तो रजी डॉट स्टोर वाले टेनेंट में बना हुआ है, ठीक है। तो रजी डॉट स्टोर के टेनेंट को आएंगी रिक्वेस्ट, then only this tenant will authenticate him and authorize him and then send him back to the reply URL, एप्लीकेशन को वापस भेजेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I'll do this once again, https peoplehub.mindtree.com,
.com। ठीक है, ये मेरा कंपनी का एप्लीकेशन है। ओके, इट्स टेकिंग मी डूइंग सिंगल साइन ऑन एंड इट्स, ये मेरा लॉग्ड इन जो अकाउंट है डायरेक्टली इससे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा और फेल होगा। सो आई विल डू अ फ्रेश लॉग इन अ फ्रेश ब्राउजर। ठीक है, मैं peoplehub.mindtree.com, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट का तो एप्लीकेशन है नहीं, राइट, बट आई एम एक्सेसिंग माय कंपनी रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैं लॉग इन कर रहा हूँ, सो इट्स टेकिंग मी डायरेक्टली टू login.microsoftonline.com बिकॉज दिस एप्लीकेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू Azure, और जो Azure के जो टेनेंट में इंटीग्रेटेड है वो टेनेंट आईडी है। ठीक है, दिस इज द टेनेंट आईडी। Got it. अभी जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंटर करूंगा, सो दिस टेनेंट इज एक्चुअली ऑथेंटिकेटिंग मी। मेरा जो टेनेंट है, क्योंकि मेरा अकाउंट वो टेनेंट में है। ठीक है, पीपल हब इज जस्ट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैन नॉट ऑथेंटिकेट मी बिकॉज एप्लीकेशन में मेरा अकाउंट बना नहीं बना था, मेरा अकाउंट तो मेरे टेनेंट में बना था। जैसे मैं ऑथेंटिकेट करूंगा वापस से peoplehub.mindtree.com पे आएगा। ठीक है, ये एक और एक वेरिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड MFA। then it will take me to Mindtree website back। ठीक है, mindtreeonline.onmicrosoft.com। ठीक है, तो वापस से मेरे को एप्लीकेशन पे लेके आया, लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे को मेरे टेनेंट पे लेके गया, login.microsoftonline.com। अंडरस्टूड जी। जी। तो अपन क्या करते हैं, ये URLs जो है, लॉगिन URL, Azure AD आइडेंटिफायर, लॉगआउट URL, ठीक है, ये सब एप्लीकेशन, ये सब क्या है, Azure के URL से। तो ये अपन एप्लीकेशन साइट शेयर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन साइट में कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसा यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, जैसा यहाँ पे ये एप्लीकेशन का यूआरएल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वैसे ही आइडेंटिटी प्रोवाइडर के यूआरएल्स, ये जो यूआरएल्स है ये कॉपी करके एप्लीकेशन को एप्लीकेशन साइट पे शेयर करते हैं, सेल्सफोर्स वाले एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां पे अपडेट करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये दोनों में एक ट्रस्ट फॉर्म हो जाता है। नाउ वंस अ ट्रस्ट इज फॉर्म्ड, नाउ दिस विप्रो कंपनी के यूजर्स को टोयोटा में एक्सेस मिल जाता। once they have trust between them, Toyota and Wipro have trust between them, now Toyota will allow Wipro employees to get inside। ठीक है, क्योंकि दोनों में ट्रस्ट है, दे बोथ ट्रस्ट ईच अदर। तो विप्रो के एम्प्लॉयज टोयोटा की कंपनी जा सकते, टोयोटा की कंपनी वाले एम्प्लॉयज विप्रो की कंपनी विप्रो में एंटर हो सकते विदाउट अ नीड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट ओवर देयर। ठीक है, विप्रो, अब इब्राहिम विप्रो को बिलोंग करते, तो अगर वो टोयोटा विजिट कर रहे, ही डोंट नीड टू हैव अ टोयोटा आईडी कार्ड सेपरेटली। ठीक है, विप्रो की आईडी कार्ड से उन्होंने टोयोटा के कंपनी एंटर कर सकते, ही कैन एंटर इनसाइड द टोयोटा कंपनी with the Wipro identity itself. Similarly, Toyota employees can enter the Wipro company with the Toyota ID card itself। ठीक है, विप्रो की आईडी कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, दो दो आइडेंटिटीज रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम आईडी से आप हर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं unless you have a trust between your identity provider and application provider। Understood Okay, or any confusion? Understood. understood. ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, ये जो SSO कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये सारे डिटेल्स क्या है शेयर करना पड़ता है एप्लीकेशन साइड। लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैमल कॉन्फ़िगरेशन में आइडेंटिफायर, रिप्लाई यूआरएल और साइन इन यूआरएल कॉन्फ़िगर करो, यू हैव द फॉर्मेट्स अवेलेबल। ठीक है, you have to configure them manually everything, reply URL है, sign on URL है और identifier है, these things the first step।
reply URL, identifier, sign on URL. 3 URLs. After that, what you have to do in order to get these URLs, not real, update these values with the actual identifier, reply URL and sign in URL. You have to contact the Salesforce support team to get these values. ठीक है, एप्लीकेशन साइट से आते ये URLs, एप्लीकेशन वाले देते आपको। ये होने के बाद आपको क्या करना है, Salesforce साइड में जाके कॉन्फ़िगर द Salesforce SSO. So you have to configure some information at the Salesforce side as well. ये Salesforce का पेज है, ठीक है, Salesforce का पेज है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये URLs कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। The assertion, ये SAML identifier identity type है, ठीक है, ये सारे फेडरेशन, assertion contains the federation ID। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, Salesforce साइड में कॉन्फ़िगर करेंगे, so that the trust is established. This is quite lengthy. अगर आप manually हर URL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो it will be lengthy. There is a shortcut as well. आप ये चीजें ऑटोमेट भी कर सकते हैं with the help of something called federation metadata file. एक फाइल रहती, वो आप शेयर कर दिए एप्लीकेशन को, डायरेक्टली वो फाइल में से वो लोग सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, जैसा ये है ऐप फेडरेशन मेटाडेटा यूआरएल, यहाँ पे एक यूआरएल है, ठीक है, यहाँ पे फाइल भी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फेडरेशन मेटाडेटा एक्सएमएल फाइल है, डाउनलोड करके सीधा एप्लीकेशन को शेयर कर दो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दैट फाइल, दे कैन ऑटोमेट इट। अब ये जो यूआरएल है, इफ आई कॉपी दिस यूआरएल एंड इफ आई पेस्ट दिस, यू विल सी सिमिलर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक यूआरएल में आ गई, फेडरेशन मेटाडेटा यूआरएल। ये यूआरएल शेयर कर दी एप्लीकेशन साइड, वो लोग क्या करते हैं अपने साइड ये यूआरएल के थ्रू सारा डेटा कलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आ गया, देखो X509 सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट था, दिस सर्टिफिकेट, ये सब ये यूआरएल में अवेलेबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस you also have the login.microsoftonline.com URLs, https login.microsoftonline.com, tenant id, SAML 2, ठीक है, ये URLs भी अवेलेबल है। everything is available in this single metadata file. this is the XML file, XML metadata file बोलते हैं इसको। तो ये URL शेयर कर दिया आप एप्लीकेशन को, तो वो लोग क्या करते हैं, ये URL से हर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। they will fetch all the information and they will configure everything at their site. Similarly, application वाले भी अगर metadata share कर दिए, then you don't have to configure these things manually. यहाँ पे upload metadata बोल के ऑप्शन है, एप्लीकेशन साइट से ऐसी एक metadata फाइल वो लोग अगर शेयर कर दिए, if they have, then it's very simple for you, सीधा फाइल अपलोड कर दो, everything is configured. अगर मेरा खुद का एप्लीकेशन है तो You have to build your metadata file. एप्लीकेशन का एक मेटाडेटा फाइल बनाना पड़ता है आपको, उसमें सब इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है। जैसा यहाँ पे है ना, ये एक XML फाइल है, इसमें आपको सब इंफॉर्मेशन है, एंटिटी आईडी है, sts.windows.net, ये वाला यूआरएल जो नीचे है ना, जी sts.windows.net, so everything is there over here. यहाँ पे सर्टिफिकेट्स है, सिग्नेचर वैल्यू है, what all you need to configure SSO is available in a single file. तो ये फाइल शेयर कर दी एप्लीकेशन साइड में, दे विल कॉन्फ़िगर इट ऑटोमेटिकली। सिमिलरली एप्लीकेशन वाले अपने को उनका मेटाडेटा दे दिया, अपन यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं एंड इट विल बी कॉन्फ़िगर्ड। यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर दीज थिंग्स मैनुअली, ये जो चीजें हैं ये कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ही नहीं है। Rasibai, so we have to contact support for this file, metadata file. एप्लीकेशन, यस, एप्लीकेशन सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना है, Okay. डेफिनेटली। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है ना, मेंशन्ड है, in order to get this information you have to contact Salesforce client support team, एक URL है, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप जी. इनको कांटेक्ट करके यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। और एल्स अगर आप Salesforce का सब्सक्रिप्शन लेके हैं, if you have subscribed to Salesforce
and you are a admin over there. जैसा कि आपकी एक कंपनी है, इब्राहिम की एक कंपनी है, and for that you have purchased the Salesforce license, तो आपको उन लोग एक लॉगिन कंसोल देते, वहां पे आप अपना पूरा मैनेज कर सकते यूजर अकाउंट्स, वहां पे आप एसएसओ भी कॉन्फ़िगर कर सकते मैनुअली, यू डोंट हैव टू कॉन्टैक्ट द सपोर्ट, यू कैन योरसेल्फ कॉन्फ़िगर द एसएसओ। जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स है नहीं, ऐसा एक ब्लेड रहता आपको, जी। सिंगल साइन ऑन सेटिंग्स बोल के सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन में, बीइंग दी सेल्सफोर्स, आप अगर सेल्सफोर्स को सब्सक्राइब करें तो आपको ये एक कंसोल मिल जाता है, वहां पे आप जाके मैनुअली सब चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेटा डेटा यूआरएल भी यहाँ पे, मेटा डेटा फाइल भी रहती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। if you need if there is some confusion, you need support, then you can contact them, otherwise everything is available for you। Salesforce वाले भी आपको सब information beforehand they will provide you, so you can directly get it। Okay. ठीक है, so this all these configurations are done by your administrator। आपकी कंपनी में जो administrator है, who is managing all these integrations of applications and all, he will be dealing with all these things। आप सिर्फ यूज करते, being a user you will just utilize it, you will never come to know that there is something like SSO configured by your administrator which you are utilizing and all। ठीक है, so apart from this you have something called attributes and claims। ठीक है, there will be some default attributes configured, given name, surname, email address, name, unique user identifier, all these things। So we know what is an attribute, right, and why it is used। Attributes क्या है मालूम है ना अपने को? हाँ, yes, Okay, so attribute is nothing but user related information। मैं बताया था ये पहले भी, yes, user attributes information. is user information। It can be username, given name, first name, last name, email address, phone number, pin code। ठीक है, हर चीज, your gender, your marital status, I mean are you married or not, and everything, every detailed information about the user is called an attribute in Active Directory। ठीक है, तो यहाँ पे application will have some attributes requested by default। ठीक है, तो ये application side में ये attributes भी जाएंगे, जैसा authentication होगा, जैसा access मिलेगा application का, in that instance these attributes will also be passed at the application side, and we discussed already why application will request certain attributes, why application will need attributes, Yes, right? Why do we need them, We need Uzma? them. they'll provide an authentication token at present. Okay। Attributes, user related information, you application को क्यों चाहिए user related information, like user का designation है, user का location है, why does application will need all this information? For authentication and Application purpose. yeah. For authentication purpose। Do you Yes. remember the example of Uber Ola application? Yes, yes, Why does Uber application needs your location attribute? To provide you a better service, Services. Yes. to बेटा provide you a इंटरफेस। better service, better user interface, right? yes, Application है जैसा कि Uber application है, Uber application will request your location attribute। अगर location attribute share नहीं करे, आप Uber application खोले, आपको cabs available दिखा रहा है बैंगलोर में यहाँ पे cabs available है, it's giving you uh-huh. the option, but it's not relevant to you। आप हैदराबाद में हैं, वो बैंगलोर के cabs बता रहा। So you have to share your location so that it will give you a better interface, better service। आपके आपके लोकेशन के करीब के कैब्स कौन से अवेलेबल है, आपको जब बताएंगा जब आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसा कि लोकेशन है, राइट? Yes, Yes. सिमिलरली अटेंडेंस वाला एग्जांपल लिए थे, याद है? अटेंडेंस एप्लीकेशन, so you will be able to submit your attendance but you Your cannot attendance, but approve you your can. own attendance, right? Your yes, manager will get that will get that option to approve the attendance, right? You yes, both are logging into the same application। आपके मैनेजर भी वही एप्लीकेशन लॉग इन कर रहा, आप भी वही एप्लीकेशन लॉग इन कर रहे, आपको वो अप्रूव वाला बटन नहीं आ रहा, आपके मैनेजर को वो बटन आ रहा, क्यों?
how the application is able to differentiate between you and your manager? Authorization. Designation. Designation attribute डेफिनेशन again. हाँ ठीक है, अगर आप मैनेजर है तो आपको ये बटन मिलेगा अप्रूव और डिनाई वाला। अगर आपका डेजिग्नेशन कुछ और है, यूजर है, एम्प्लॉय है, नॉर्मल कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है, तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज वाई एट्रीब्यूट्स आर इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ ऑथेंटिकेशन। दिस इज वाई एप्लीकेशंस विल रिक्वेस्ट सर्टेन एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आइडेंटिटी प्रोवाइडर। एट्रीब्यूट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? आइडेंटिटी प्रोवाइडर आइडेंटिटी सर प्रोवाइडर, दैट इज नथिंग बट एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी यस जहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ वहां पे एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं। डायरेक्टर एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होते हैं? स्कीमा If मास्टर you schema master, perfect. Schema stores the attributes, right? We discussed this यस in detail. तो ये क्या होता है, जब भी ऑथेंटिकेशन होता है, जब भी आपका एक्टिव डायरेक्टरी आपका यूजर अकाउंट को ऑथेंटिकेट करता है, पहले तो क्या होता है, एप्लीकेशन पेज पे जाते हैं facebook.com या salesforce.com। ठीक है, जैसा मैं अभी मैं लॉग इन किया peoplehub.mindtree.com, तो उन्हें क्या करता, मेरे को रीडायरेक्ट करता मेरे आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे, मेरे एक्टिव डायरेक्टरी पे login.microsoftonline.com/my-tenant-id, वहां पे रीडायरेक्ट करता, बोलता कि जाओ पहले ऑथेंटिकेट करके आओ। तो एक्सेस देता हूँ, पहले ऑथेंटिकेट करके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करके ऑथराइजेशन करा लेके आओ, तो एक्सेस देता हूँ। ये बोल के मेरे को रीडायरेक्ट कर देता login.microsoftonline.com पे। ये रीडायरेक्ट करने के टाइम पे मेरे आइडेंटिटी प्रोवाइडर को ये भी बोलता कि मेरे को ये एट्रीब्यूट्स चाहिए रेस्पॉन्स में। ठीक है, रिडायरेक्ट करता उस टाइम पे ये भी बोलता कि मेरे को ये एट्रीब्यूट्स भी चाहिए। व्हेन यू विल मेरे आइडेंटिटी प्रोवाइडर को ये बोलेगा कि ऑथेंटिकेट हिम, वेरीफाई हिज क्रेडेंशियल्स, ऑथराइज हिम एंड देन सेंड हिम बैक टू मी। व्हाइल यू आर सेंडिंग हिम बैक टू मी, आल्सो सेंड द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जब authenticate and authorize होके वापस आता यूजर, it will come back with the attributes to the application, then application will present him a session, active session। ठीक है, क्लियर है? Yes. All right, यस now comes the discussion about the tokens and how I mean how long the session will be active, when will he have to log in the next time, I mean next time कब credentials provide करना पड़ता। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो यहाँ पे टोकन्स कुछ जनरेट होते हैं। ठीक है, व्हेन द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड by the identity provider, when the authorization and authentication is completed, then the identity provider will send a response back to the application। ठीक है, सैमल में सैमल का फ्लो कैसा होता है, एक है सैमल रिक्वेस्ट, एक है सैमल रेस्पॉन्स। ठीक है, SAML request में क्या है, application will send the request to identity provider asking for authentication and authorization. Identity provider will complete the authentication and authorization process. Excuse me. It will complete the authentication and authorization process, and then it will send a response back to the application that I have authenticated this user successfully. Take this token back एंड ऑल्सो द एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है सैमल रेस्पॉन्स। एक था सैमल रिक्वेस्ट जो गया एप्लीकेशन से आइडेंटिटी प्रोवाइडर को, फिर आइडेंटिटी प्रोवाइडर से वापस आया एप्लीकेशन को सैमल रेस्पॉन्स। ठीक है, सैमल रेस्पॉन्स में कुछ टोकन्स रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी टू टोकन्स, एक है एक्सेस टोकन और एक है रिफ्रेश टोकन। ठीक है, I'll do one thing. I'll try to capture a SAML flow. ठीक है, 1 second. So that will be very much interesting. There is a software which will capture the browser traffic. It's a network trace which I'm going to capture, and I'll showcase how a SAML request and a SAML response looks like. Before we discuss about the tokens, we'll do this test.
Or else I can do one more thing. But start the caption. All right, so this traffic has been captured over here in this tool. Mindtree, online, on Microsoft, everything is captured. Okay. Now I'm inside the application. I'll stop the capturing over here. This is a network trace. Okay. We'll take a look on this trace. So it will capture the browser traffic. So here comes the login.microsoftonline.com. Don't get confused. It's just a tool. ठीक है एक tool है जो traffic capture करता. So with the help of this tool, I will showcase you how does the traffic flows in this login behavior. जो मैं अभी login किया ना यहाँ पे peoplehub.mindtree.com फिर वो क्या क्या मेरे को login.microsoftonline.com पे रिडायरेक्ट किया. रिडायरेक्ट करने के बाद फिर टोकन्स कैप्चर हुए. टोकन कैप्चर होने के बाद ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथराइजेशन हुआ, उसके बाद टोकन्स मिले. फिर रेस्पॉन्स वापस गया एप्लीकेशन पे एंड इट लॉग्ड मी इन सक्सेसफुली. तो ये जो फ्लो हुआ ट्रैफिक का, दैट इज कैप्चर्ड इन दिस टूल. ठीक है. So with this tool, I'll showcase you how does a SAML request and a SAML response looks like. peoplehub.mindtree.com. My screen is visible, right? ये text visible है या बहुत छोटा है? Visible है. ठीक है.
ठीक है, ID token was generated. Okay. Okay, this flow is not using SAML, it is using OAuth, a different protocol. I can see here it's using OAuth client redirect. So it's not using SAML over here, it's using an OAuth flow. So applications can be configured with different flows. So this application is using OAuth flow, not the SAML flow, it seems. Yep, because we have ID token generated, it gets generated in the OAuth flows, not with the SAML flows. So these are different protocols, OAuth, SAML. Okay. Yep. So in order to get a SAML flow, we may have to log into some other application. Let me just think about it. Which application we can go for? I also had some fiddler traces. Yep. I'll do one thing. I'll capture this offline because these applications are using different protocols, not the SAML one. So I'll have a test application which is using SAML, and then I will capture a fiddler trace wherein I can showcase you how does a SAML request and SAML response looks like, and how does the tokens looks like. ठीक है, टोकन कैसा कैप्चर होता है, टोकन के इनसाइड क्या इंफॉर्मेशन रहती है, वो सब अपन देखेंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे मल्टीपल जी एप्लीकेशन, but those applications are using different protocols, not the SAML one. So I'll have a SAML one tested out. ठीक है, I'll do this. So SAML response में basically क्या होता है, कुछ tokens रहते हैं, ठीक है, tokens will get generated from the identity provider. So once the identity provider has completed the authentication step and authorization step, it will send the response back to the application. Hey, okay, I have validated his credentials, he is good to go. ठीक है, I have मैं ये user के credentials verify कर लिया, his credentials are good, correct, and he is good to access the application. ठीक है, ये रेस्पॉन्स आता है एप्लीकेशन को वापस आइडेंटिटी प्रोवाइडर से. ठीक है, ये रेस्पॉन्स आने में, ये रेस्पॉन्स क्या में आता है, टोकन फॉर्मेट में आता है. ठीक है, देयर विल बी अ टोकन, देयर विल बी टू टोकन्स बेसिकली. ये दो टोकन्स आते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर से एप्लीकेशन को. व्हाट आर दोस टोकन्स? वन इज एक्सेस टोकन एंड अनदर इज रिफ्रेश टोकन. ठीक है, ये दो टोकन्स है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
in any kind of authentication flow which you are going through, ठीक है, कोई भी authentication है, कहीं भी आप log in कर रहे हैं, there will be tokens communicated, ठीक है. Majorly these two tokens will be generated, access token and refresh token, ठीक है. In an authentication flow there will be two tokens, access token, refresh token, ठीक है. access token क्या करता है, आपको सेशन देता, it will give you a session to work on, ठीक है. आपको एक एप्लीकेशन का सेशन ओपन करके देता, ठीक है. जैसा कि आप फेसबुक लॉग इन कर, फेसबुक आप ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको जब लॉग इन होता, दिस सेशन विच यू गेट इनसाइड द एप्लीकेशन, राइट, आपको एक एप्लीकेशन का कंसोल मिलता, एप्लीकेशन ओपन होता, आप एप्लीकेशन यूज करते, तो वो सेशन कैसा मिलता, एक्सेस टोकन के थ्रू मिलता, ठीक है. एंड योर सेशन विल बी एक्टिव फॉर 1 आवर, एक्सेस टोकन की वैलिडिटी 1 आवर रहती. बाई डिफॉल्ट एनी एक्सेस टोकन लाइफ टाइम इज 1 आवर मैक्स टू मैक्स. आप इसको डिक्रीज कर सकते लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते. एक्सेस टोकन की लाइफ टाइम जो है, एक्सेस टोकन का जो वैलिडिटी है, वो 1 आवर रहता मैक्सिमम. मिनिमम आप इसको कम कर सकते, यू कैन मिनिमाइज द लाइफ टाइम बट यू कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 1 आवर. एक्सेस टोकन का बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी 1 आवर रहती, ठीक है. ये जो रिफ्रेश टोकन है, रिफ्रेश टोकन की वैलिडिटी रहती, बाय डिफॉल्ट इट्स लाइफ टाइम विल बी 14 days, ठीक है. 14 days, 2 weeks की वैलिडिटी रहती by default when it gets generated. You can expand the validity of this refresh token to maximum 90 days, 90, 3 months तक आप expand कर सकते हो. Now, what is the use of this refresh token? What does it do? अभी आप लोग फॉर एग्जांपल यू यूजिंग एन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ये टीम्स, अभी टीम्स में लॉग्ड इन है, ठीक है, 1 घंटा आप यूज किए, इट डज इट लॉग्स यू आउट आफ्टर 1 आवर? आपको फिर से ऑथेंटिकेशन के लिए बोलता है क्या 1 घंटे के बाद? No. No. योर एक्सेस टोकन इज एक्सपायरिंग आफ्टर 1 आवर. आपका जो, अब आप लॉग इन किए आज, ठीक है, 1 घंटे तक आपका एक्सेस टोकन वैलिड है, 1 घंटे के बाद आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता, ठीक है. तो रिफ्रेश टोकन क्या करता, इट विल रिफ्रेश योर सेशन, ठीक है. रिफ्रेश टोकन विल गो बैक एंड ब्रिंग अ न्यू एक्सेस टोकन फॉर यू, विल गो बैक टू होम, गो बैक टू Okay. द प्रोवाइडर, ठीक है. रिफ्रेश टोकन का काम ये है कि आपको नया एक्सेस If टोकन लेके आके we देना. keep the application, ये या इब्राहिम, अगर एप्लीकेशन इनएक्टिव है 1 आवर के लिए, तो तब पूछता हो कि would you like to continue और लॉग आउट करना है क्या बोल. इनएक्टिव रहा तो, राइट, अगर आपका सेशन इनएक्टिव है तो Yes. आपको बोलता है कि लॉग आउट कर, योर सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर, राइट, वो ठीक है. लेकिन आप Yes. Yes. Exactly. एक्टिवली यूज कर रहे हैं आप एप्लीकेशन, राइट, आप लॉग इन किए, आप एक्टिवली काम कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो क्या होता, आपका रिफ्रेश टोकन क्या करता है, जाके नया एक्सेस टोकन लेके आता. कहाँ जाता, आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर को जाता, जाके वहां से नया एक्सेस टोकन लेके आता. सो इट्स डूइंग योर ऑथेंटिकेशन ऑन योर बिहाफ, राइट, आपके बिहाफ में कुछ काम कर रहा हो. Instead of you going back and getting the access token, it is going on behalf of you and bringing you a new access token, ठीक है. And this is how your session will keep expanding, your session will keep expanding. आप actively use करते जा रहे, तो आपका session expand होते जाता. Access token change होगा, every hour को access token change होगा, right. New access token is being brought up by the refresh token, ठीक है. मैक्सिमम अगर आप एक्टिवली यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम 90 days, 3 months, उसके बाद आपको साइन आउट होता. फॉर श्योर इट विल साइन यू आउट एंड यू हैव टू ऑथेंटिकेट, नो मैटर हाउ एक्टिवली यू आर यूजिंग इट, it will sign you out and it will ask you to re-authenticate after 90 days, because 90 days के बाद refresh token की validity भी खत्म हो जाती. So it will ask you to re-authenticate to get a new access token as well as a new refresh token, ठीक है. So this is how the authentication works and this is how the tokens gets generated for each authentication, access token and refresh token. Clear है, confusion है? Clear. Okay. So SAML flow अपन एक बार देखेंगे. Maybe next class I will have a test application ये SAML. Yes sir. रिफ्रेश टोकन का टाइम डिक्रीज कर सकते हैं? By default 14 days रहता. You can decrease it for sure, yes, you can decrease it, but usually it's not recommended. Microsoft doesn't recommends,
to decrease. 14 days minimum है. अगर आप actively application use कर रहे तो definitely it will keep expanding. Yeah, there is something called sign in frequency. एक concept है जो अपन पढ़ेंगे next sessions में, where you can configure a policy which will force the users to log out and log in again. आपके कोई बैंक रिलेटेड एप्लीकेशंस रहते हैं, आई मीन एनीवन यूज नेट बैंकिंग ओवर हियर? नेट बैंकिंग आप जी जी एप्लीकेशन अगर लॉग इन करते हैं तो वहाँ वो क्या है, बहुत सिक्योर एप्लीकेशंस है, बहुत बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, राइट? यू हैव अ वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इनसाइड इट, सो इट्स वेरी अनसेफ टू हैव द सेशन एक्टिव लॉन्गर टाइम. अगर सेशन एक दिन दो दिन के लिए एक्टिव रहा तो कोई भी इजीली हैक कर सकता है आपका अकाउंट, राइट? आपका सेशन किसी को अगर एक्टिवली मिल गया तो कोई मिस यूटिलाइज कर सकता आपका बैंक अकाउंट को, राइट? For that reason, mostly banking applications are configured with lesser lesser I mean validity. तो मतलब उनके जो tokens है जल्दी expire होते, ठीक है? Yes. Lifetime will be very less. So those tokens will expire very soon, and then it will again ask you to authenticate after some period of time. ठीक है? Yes. All right. Any questions? So we will take a look on the SAML flow once again. I will have a test application and I'll capture a fiddler trace, network trace. Over there we will see how SAML request looks like and how SAML response looks like. Okay. Okay. All right. Stop the recording. Yes.